से चाहिए है लौ लगानी कि सब फानी है पर वो गैर फानी। खुदा ने हमको दी है कामरानी फसुबहानल्लज़ी औफल अमानी। या इलाही अंज़िलिल फ़ज़्ल अलैना लियज़ीअ الخير في كل المكان ورسول الله خير الناس هديا قدوتي في السر والإعلان। रसूलुल्लाह हमारे पेशवा हो, रसूलुल्लाह हमारे पेशवा हो। मिले तौफीक उनकी इक्तदा की खुदा ने हमको दी है कामरानी फसुबहानल्लज़ी औफल अमानी। फसुबहानल्लज़ी औफल अमानी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a warm welcome to Hadiqatul Mahdi for the last day of this, the 60th annual convention of the Ahmadiyya Muslim community in the United Kingdom. We will begin the program with a recitation of the Holy Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस इत्तमाम से एक शम्ए अंजुमन के लिए वफ़ा के नूर में डूबे हुए हैं परवाने। जमात अहमदिया बरतानिया के 60वें जलसा सालाना की तीसरे और आखिरी दिन की बराह रास्त नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले तिलावत कुरान करीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. नाज़रीन किराम, अभी आपने आयतुल कुर्सी की तिलावत सुनी है और मोहब्बत इलाही के लिए ज़रूरी है कि हम सिफ़ात बारी ताला और अल्लाह ताला के कामों के बारे में ज़्यादा गहराई में जानें। And here we are, the final day of the 60th annual convention. The time has flown by, Burhan Sahib. The Jalsa Salana, we're on the third day of the Jalsa Salana. The MTA has been bringing coverage
of the Jalsa Salana over the last 2 days and now into the third day to everyone who's watching at home. And in a few moments, we will take you through the program for today. जी बिल्कुल हमाद साहब, अभी कल की बात ही लग रही है, हम तैयारियों में थे और आज जलसा सालाना बरतानिया सन 2026 का तीसरा और आखिरी दिन है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। So today, inshallah, we'll start with at 9 a.m. GMT. We will have the fourth session of Jalsa Salana. Dignitaries and scholars from within the community will deliver speeches during this session. Then at 12 o'clock noon GMT, we will have one of the main highlights of Jalsa Salana, the International Ba'ath ceremony. Later at 2:15 p.m. GMT, we will hear from some of the dignitaries in attendance, followed by the concluding session. The concluding session is scheduled to begin at 3 p.m. GMT, and with that session and the final prayers led by beloved Huzur, Hazrat Amir al-Momineen, the formal program of the 60th Jalsa Salana United Kingdom will conclude. जी बिल्कुल, GMT के मुताबिक सुबह 9 बजे जलसा सालाना के चौथे इजलास का आगाज़ होगा, जिसमें जमात के उलमा तकारीर करेंगे। इसके बाद 12 बजे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र-ए-अज़ीज़ जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे और आलमी बैत का रूह परवर नज़ारा दुनिया देखेगी। इसके बाद सपहर 2:15 पर जलसा सालाना में शरीक बाज़ मोअज़्ज़ज़ मेहमान पैगामात पेश करेंगे, अपनी तकारीर करेंगे और प्रोग्राम के मुताबिक शाम 3 बजे इख्तितामी इजलास का आगाज़ होगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र-ए-अज़ीज़ इख्तितामी ख़िताब फरमाएंगे और दुआ के साथ 60वें जलसा सालाना बरतानिया का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। Jazakallah Burhan Sahab. So it is Sunday today, the final day of the Jalsa Salana. And of course, one of the events that is much awaited is the International Ba'ath. And that is coming up at 12 o'clock GMT this afternoon. And our team are ready to give us a sense of the mood in the Jalsa Gah. Obviously, they're setting up there, so we'll join them there in a few moments. बिल्कुल, ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का। आज जलसा सालाना में दिन है आलमी बैत का और ये ख़ास रूह परवर नज़ारा यहाँ हम भी देखेंगे और सारी दुनिया के नाज़रीन और सामीन भी देखेंगे। आइए देखते हैं कि इस वक्त जलसा गाह में आलमी बैत की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और इसके लिए हम बात करते हैं रज़ा अहमद और मंसूर क्लार्क साहिब से। हो जाता है इस तरह लाइव प्रोग्रामों में कि हम कहीं बात करना चाहते हैं, वो फौरी तौर पे नहीं हो पाती, लेकिन असल बात जो ये है कि ये जो एक अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और ये जो आलमी बैत का नज़ारा भी आज जो हम देखेंगे, जो लोग यहाँ पहली दफ़ा शामिल हो रहे होंगे वो इसको महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। वो जज्बात बिल्कुल। और अब रज़ा साहब, मंसूर साहब, क्या सिचुएशन है आप बताएं? Again, welcome to the third glorious day of Jalsa Salana 2026. Raza and I are here in the main Jalsa Gah just as the preparations, the final preparations I should say, are being made for the Almi Ba'ath, the International Ba'ath ceremony. Of course, you can see the preparations just going on behind us now. It's a day of spiritual reflection, spiritual preparation, a day that people look forward to indeed throughout the entire year, a moment where people reflect on what it means to enter the Jamaat of the Promised ﷺ, to understand the conditions of Ba'ath, to understand truly what it means to be an Ahmadi Muslim. बिल्कुल मंसूर साहब, हमने कल भी इसका ज़िक्र किया था कि आप पहले दिन अगर जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनसे पूछते हैं कि जलसे की कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी तकरीर या कौन सा ख़ताब या कौन सा दिन है जो आपका फेवरेट है, जिसके आप मुंतज़िर होते हैं। तो तमाम लोगों ने हमेशा यही जवाब दिया है कि बैत का जो मंज़र है, बैत की जो तकरीब है, वो उनका हाईलाइट होती है। यहाँ पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिनस्र-ए-अज़ीज़, जिस तरह के हमने पहले बताया कि
12 बजे GMT तशरीफ़ लाएंगे और ये तमाम सफ़े जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, आखिरी फ़ाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और जो मेहमान हैं यहाँ पर जो ठहरे हुए वो अभी आकर यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि पहली चौथी सेशन है जलसा सालाना का, वो शुरू होने को है। तकरीरें सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बैत की तकरीर शुरू होगी और तमाम मेहमान और तमाम कारकुनान पूरे जलसा में जो भी यहाँ पर फ़र्द जमात मौजूद हैं वो एक चेन बनाकर हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला अज़ीज़ के हाथ पर तजदीद अहद करेंगे। And that's always one of the the key sites that we see, and it's one of the famous sites again. But it's not just about the imagery; it's about what it means as well. So where they create that human chain, all linked, as it were, almost a hand under the hand of Hazrat Khalifatul Masih, it means a joining of the hearts as well. And of course, that pinnacles in that sajda-e-shukr, that sajda of thankfulness to God, who has enabled us and given us this opportunity to become part of this Jamaat of the Prophet. It's no small thing. Indeed, it's the very purpose of our creation. That's something that Allah Ta'ala has enabled us to be able to fulfill. So all the preparations are going on around the Jalsa Gah and the Jalsa arena for that special occasion. साहब, हमारा अगला हिस्सा है कि एक तबलीग के बारे में हमने बताना है। तो यहाँ पर एक तबलीग नशिस्त हुई थी जुमेरात वाले दिन। Absolutely, yes. Absolutely. So I believe there's a tabligh nashist which we're going to be speaking about a little bit later on. And inshallah, we're going to be speaking about that a little bit later on. But back to you guys in the studio. Jazakallah, Raza and Mansoor, for that glimpse into the build-up for the International Beth. And as we bring you our continued coverage of the Jalsa Salana, you've been sending us your messages, and it's really nice to be able to read some of those messages out and show some of those messages. So we'll start here with a message from the UK, Jalsa Salana UK, Zindabad, from Shafiq Ahmed, and a beautiful young child there. The name there is Zainab Shafiq. Obviously someone has dressed up wonderfully for the Jalsa Salana, so really nice to see. We continue to get lots of messages from young children as well, and I have a message here from Athar Mia, watching Jalsa from my deployment in Ukraine. Love Jalsa, and so that's really nice to see. And we have another message here from Bosnia Herzegovina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jalsa Salana UK Mubarak from Bosnia. May Allah grant Hazur a long and healthy life. Ameen. बुरहान साहब मैसेजेस तो आए चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही हम अपने नाजरीन से कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर अपने मैसेजेस हमें भेजते रहें। अगला मैसेज जो आपको दिखाना चाहते हैं वो मज़हर अहमद साहब की तरफ से है, और ये जर्मनी से अपना पैगाम देते हैं। अल्लाह ताला हर लिहाज से जलसा सालाना बाबरकत फ़रमाए, आमीन, और प्यारे आका को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनमें बच्चों की तस्वीर हैं कि वो किस तरह जलसे के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो किस तरह ख़ास तौर पे एहतमाम के साथ ये जलसा सालाने के अय्याम गुजार रहे हैं। एक और मैसेज जो आपको दिखाना चाहेंगे वो सितारा बरूज साहिबा ने ताहिराबाद बदीन से भेजा है, और वो कहती हैं कि जलसा सालाना बरतानिया मुबारक, ये रोज़ कर मुबारक, सुबहाना मैरानी। आखिरी मैसेज जो मैं अभी पढ़ना चाहूँगा वो मोहम्मद ज़फ़र साहब का है, कनाडा से भेजा है। वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात अहमदिया मुस्लिमा आलमगीर को जलसा सालाना यूके की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम ममालिक में रहने वाले अहमदियों का हाफिज़ व नासिर हो। जलसा सालाना पर काम करने वाले तमाम रज़ाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम देख रहे हैं जलसा के मनाजिर भी और आपके पैगामात भी सुना रहे हैं। हमाद साहब, आपके पास कुछ और पैगामात हैं जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। Right, so I can hopefully bring some up. We've got a picture up there on your screens now of two young children who are clearly enjoying the Jalsa Mubarak from Sweden.
So that's really nice. And then another one here, a message from Trinidad and Tobago. Jalsa UK Mubarak to all from Trinidad. May Allah bless all the participants of the Jalsa. We're all enjoying the Jalsa through the blessings of MTA. So let's now give you a sneak peek of what is going to be coming up in between the formal sessions of the Jalsa Salana for all of our viewers exclusively on MTA. Will Allah accept our supplication and wipe our slate clean to wander the earth once more? How many more second chances are we going to get before Allah calls us back to Him? Can we afford to keep stumbling? नमाज चूँकि इंसान की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है, तो जब मैं अल्लाह ताला के फजल से नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे ये चीज़ का एहसास होता है कि मैं अपने पैदाइश के मकसद को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ. Today we bring you just some of these selections of guidance that have taken place throughout the second half of 2025 and the first half of 2026, among the hundreds of other activities we already get to see. And that was just a little sneak peek into what's going to be coming up, inshallah, on MTA for all of our viewers at home, in between all of the formal sessions. And Burhan Sahib, yesterday, when we showed the map of the world, I was speaking to the team afterwards as we were going through the map and showing the various different countries where people were able to see where the messages were coming from. Then the number of messages, alhamdulillah, were flooding in after that. So we want to encourage that again. And now, though, we are going to go to Raza and Mansoor, who are over at the bookstore, giving us some insight into what is happening there. Jazakumullah Burhan Sahib and Jazakallah Hamad Sahib as well. I mean, of course, yes, we are here at the bookstore of Jalsa Salana 2026, and of course you can see the wide array of books and the assortment of books that they have for sale here as well. Of course, yesterday we had the privilege of hearing from Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz about the progress of the Jamaat. 398 new Jamaats, 172 new mosques coming into the property list of the Jamaat. Again, a number of other things that were mentioned. And one of those things that were mentioned was just the sheer number of publications that are being produced by the Jamaat as well. And of course, we have an array of books here, some new, some older, but of course, all absolutely brimming with the theme, again, of this year's Jalsa Salana, which of course is Muhabbat Ilahi, the love of Allah. Here we have a fresh edition of Volume 5 of Malfuzat, the sayings and discourses of the Prophet ﷺ. We have answers of everyday issues, a number of other books of the Prophet ﷺ as well. Again, Raza Sahib, it's one of those things where it's not just a claim that we will cause our message to reach the corners of the earth. Allah Ta'ala, through the Jamaat of the Prophet ﷺ, is fulfilling that promise on a daily basis. मंसूर साहब, पिछले सालों से जब कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तीसरे दिन हजूर अनवर ईदुल्लाह ताला अज़ीज़ जब दूसरे दिन खिताब फरमाते हैं, जमात की तरक्कियात के मुतालिक जमात को आगाह करते हैं, अगले दिन अगर आप यहाँ पर बुक स्टॉल पे और बुक शॉप पे आते हैं तो अक्सर यही आपको नज़ारा नज़र आता है कि तमाम तकरीबन जो किताबें हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी होती हैं. लोग यहाँ पर आते हैं, किताबें लेकर जाते हैं. जिस तरह के हमने आपको पहले बताया कि एक तो तराजम है कुरान मजीद के, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब के, और इसी तरह बच्चों के लिए भी यहाँ पर किताबें शाये की जाती हैं. बोर्ड गेम्स होती हैं ताकि एज अ फैमिली आप घर में जो ये पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का जो रिवाज है, उसको कायम रखें और उसको बरकरार रखें. It's very interesting. As you walk through, you see some titles which you don't recognize and some that you do. Of course, this was a copy that actually, alhamdulillah, a large team had the opportunity to work on. Mentioned, of course, as a treasure trove yesterday by Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah bin Nasr al-Aziz. This is Volume 1 and this is Volume 2 of the Sharah, the commentary and translation of Sahih Bukhari by Hazrat Shah Waliullah Sahib. Again, something which we not just claim to be giving that rejuvenation of Islam, but indeed to be acting upon it and showing the world that we are leading by our example. And I mean, it's quite difficult, of course, to understand just how many books the Jamaat is publishing. This is just a fraction of the kind of publications, the books, the leaflets that Hazur was mentioning yesterday. But I mean, if you look at the quality
of some of these books. I mean, what a beautiful cover. This is Nur al-Haq, of course, a book by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. But the amount of effort that goes into the preparation of these books, the translation of these books, it leaves one at a loss for words, actually. Definitely, I think it's, it has to be physically appealing as well, as you mentioned. So that's why you see a lot of people who come here after the sermon of Hazur Anwar Eidullah Ta'ala ibn Aziz. I think we just here's have the kids section. Quick mention here again of some of the books for the children. Again, something for everyone in this session. Of course, one of the main things that Hazur Aqdas Eidullah ibn Aziz mentioned was the propagation of the message of Islam and the message of the Prophet ﷺ. On Thursday, actually, there was a session that took place here at Jalsa Salana where dignitaries and representation from all around the world came together to understand the importance of spreading the message of Islam and how to put more effort into the field of tabligh as guided by Hazrat Khifti Masih al-Khamis Eidullah ibn Aziz. Let's take a look at that now. The International Tabligh Seminar is such an important event, which is really for decennia, held in our Jamaat. And it's taking place exactly on the Thursdays, one day before the start of Jalsa Salana, where we invite all the national Umara, all the national Sadran, all the national secretaries Tabligh, and all the Naibin, and all the Sadran of the auxiliaries, in this case Majlis Khudam al-Ahmadiyya and Majlis Ansarullah. The topic is chosen by Hazur Aidullah himself, and Hazur, you can say, drafted possibly 90% of that program. It was attended by 300 members across Jamaati Ahmadiyya worldwide. The topic was strengthening the impact and the effectiveness of Tabligh, developing strategies, Tabligh strategies to increase one-to-one Tabligh, to increase the bay'ats, to increase the scope of Tabligh activities, how to approach Tabligh. Impact and the effectiveness of Tabligh, developing strategies, Tabligh strategies to increase one-to-one Tabligh, to increase the bay'ats, to increase the scope of Tabligh activities, how to approach Tabligh with humility, with wisdom, and with love and kindness. Then Hazur, beside that, told the chief editor of Review of Religions, in this case Amr Safir, to have two presentations. One is for the next years, as far as I understand, 125 years, establishment of the magazine Review of Religions. Hazur told him to speak about Review of Religions as a tool for intellectual Tabligh in modern days. And second topic he got was very interesting, which is also purely Tabligh related, and to see how the media organizations and the publications, utilize their data, especially their audience data, for the audience segmentation. One of the objectives that Hazrat Masih Maud set for the Jalsa, in addition to Tarbiyat and Taaleem, is Tabligh. And Jalsa, of course, conveys the message of Tabligh, conveys the message of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Eidullah Ta'ala ibn Aziz. But adding Tabligh seminar to Jalsa Salana, which the focus is provided by Hazur Umar, because as Ibrahim Saab just mentioned, that the objective and the guidance was given by Hazrat Amir al-Mu'mineen, Eidullah Ta'ala ibn Aziz. Because this is an international Jalsa, because of the presence of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Eidullah Ta'ala ibn Aziz, this Jalsa truly becomes a Jalsa where not only the message is conveyed, but also where how this message should be delivered based on the guidance of Hazur. Hazur said, thus, we must never weaken in our resolve to ensure that the true message of Islam reaches every single person in every single country of the world. This is the great task given to us by the Prophet Messiah alayhi salatu wassalam. May Allah grant you every success in this pious enterprise. In conclusion,
This is very important. I say to all of you that now is the time to come forward and pledge with absolute determination and resoluteness that you will forever seek to bring about all the pure changes required to fulfill the conditions of the oath you have taken with the Prophet Messiah alayhi salatu wasalam. If we do so, inshallah, we shall become a means of conveying Islam to others, drawing our fellow citizens and people across the world under the shadow of true Islam. Welcome back to the studio, and that was a really lovely insight into the work of the Tabligh team during the Jalsa Salana. And out of all of the different mechanisms we have for doing Tabligh, the publication of books is one really important one. I'm joined in the studio now by Mubashir Zafri, my co-presenter, and we're going to be talking about books and publications. And yesterday, Huzur mentioned all of the many books that have been published this year, and we have some guests as well in the studio if you want to introduce and welcome them. Absolutely, Jazakallah. So just as was mentioned by Dr. Hamad Sahib, in the past year 353 books were published in 53 different languages, 37 different languages. And we have now two guests in studio. We are joined by Numan Hadi Sahib, who is currently serving in Wakalat-e-Tasneef. And we have Malik Muzaffar Sahib, who is in charge of Rakeem Press. As mentioned, there are many books that are being published in various capacities. What's the importance of publishing all these books? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the history of publications in our Jamaat is a divine tradition. There's a revelation in Tazkira, which is another book, and it's a collection of the revelations of the Promised Messiah alayhi salam, where Allah the Almighty has instructed the Promised Messiah alayhi salatu wasalam to publish his revelations, to publish his tabligh. And this is a divine tradition that the Ahmadiyya Muslim community has inherited, and we are very fortunate for that. And nowadays we have, since the beginning, murabbis, people dedicating their lives for the sake of the literary tradition. And as you mentioned, Huzur went over just some of the publications, and this is something that Huzur mentioned as well yesterday. And these are available in the bookstore. But this tradition that we have can only be kept alive if we actually reading these books. This is something that Huzur mentioned as well. So we can only encourage members of our community from a young age to begin reading, and you will actually become a different person if you read the books of the Promised Messiah. Absolutely, it's very important to read those books. मलिक साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, कल हुजूर ने एक फ़ॉन्ट के बारे में कुछ फरमाया, नया फ़ॉन्ट, उसके बारे में आप मुख्तसर तौर पे अगर बयान फरमा दें। जी, ये जो नया फ़ॉन्ट है, ये असल में उर्दू जो हम नस्तालिक इस्तेमाल करते हैं आम किताबों को उर्दू में टाइपिंग के लिए, हम उस इस्तेमाल करते हैं नूरी नस्तालिक। लेकिन ये नस्तालिक बहुत सी इसमें ऐसी खामियां थी जो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। तो एक ऐसा मौका आया कि तफसीर सग़ीर की हुज़ूर ने फरमाया कि इसका अरबी मतन जो है वो आप ख़त मंजूर में करें, जो कि जमात ने तैयार किया ये ख़त भी, और जब उसका उर्दू मतन है उसके लिए भी कोई सोचें उर्दू में कि हमारा अपना कोई फ़ॉन्ट हो तो जो हम इसमें कर सकें। तो हमने इंडिया की एक कंपनी से बात की, नज़रत इशात कादियान के ज़रिए, इन लोगों का बड़ा रोल है इसमें। तो उन कंपनी ने कहा कि ठीक है हम इसको तैयार कर देंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया में अगर कोई एक ही उर्दू का फ़ॉन्ट है तो वो नूरी नस्तालिक था, लेकिन उसका दूसरा जो अब इंट्रोड्यूस हुआ वो जमात ने किया, जो उससे कहीं बेहतर है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम हजूर की खिदमत में तजवीज़ पेश हुई कि हजूर इसका नाम मसरूर नस्तालिक या अहमदिया नस्तालिक रखते हैं। हजूर ने कदर तवक़्क़ुफ़ अख्तियार करने के बाद आसमान की तरफ नज़र उठाई और फरमाया इसका नाम तौहीद नस्तालिक रखें, क्योंकि ये हमारे नीज़ फरमाया कि हमारे तमाम काम जो है वो इसी के गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त से बाद से इसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद नस्तालिक हो गया है। ज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद नस्तालिक फ़ॉन्ट है जो नया फ़ॉन्ट है। तो हमाद साहब, Jazakallah, lovely to have that insight into the new publications and the new progress that the Jamaat is making in publishing books as well. And now we are heading into the next live session in the Jalsa Gah in just a few moments from now.
and we will continue MTA's live coverage of the Jalsa Salana for everyone at home. Jazakallah for staying tuned.